एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। इस टाइम मेरी वीडियो देख रहे होगे। आज की वीडियो सुपर डुपर अमेजिंग, क्योंकि आज की वीडियो पे मैं करने वाली हूँ अपना स्टूडियो सेटअप। मैंने इससे पहले दो वीडियो बना चुकी है, एंड इसमें मैंने पोस्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि वो वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं थी। एंड ये वाली मैं चाहती हूँ कि मेरी वीडियो की क्वालिटी अच्छी रहे। मैं इस बार जो सेटअप करने वाली हूँ सब हमेशा के लिए रहने वाले हैं। मतलब हमेशा के लिए तो नहीं, बट हाँ, रह सकते हैं। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले मैं अपना सामान हटाऊंगी, क्योंकि मेरा टेबल इतना गंदा और मेस्ड हो चुका है कि बस पूछो ही मत। अगर मैंने डायरेक्टली रखने का सोचा भी तो इतना गंदा और मेस लगेगा। एंड मैंने इसके लिए क्यूट सा ऑर्गेनाइजर बनाया है, तो लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि एंड रिजल्ट इतना प्यारा है कि मैंने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट इतना प्यार और इतना एस्थेटिक है, तो लेट्स गो एंड क्लीन अप करते हैं। क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ, तो मैं इसलिए म्यूज़िक डाल दे रही हूँ, तो आप म्यूज़िक भी इंजॉय करो। गाइस, अभी मेरा कुछ सेटअप ऐसा लग रहा है। अभी मैं ये हटा के साफ़ करने वाली हूँ, तो चलो साफ़ करते हैं। इट्स कंप्लीट। अभी मैंने एक ऑर्गेनाइज़र है, उसे मैं यहाँ पे रखने वाली हूँ। यहाँ पे चलो रखते हैं। तो दिस इज़ द ऑर्गेनाइज़र जो मैं यहाँ पे रखने वाली हूँ। दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। तो चलो अब सामान ऑर्गेनाइज करते हैं। Now it's finally completed. One, two, three, four. One, two, three. 너 그래 너 요새 너 조금 이상해졌어. 자꾸만 시도 때도 없이